evening, everyone. Welcome to the live broadcast. Elite T20 of C&DCL. This match is between Knight Riders and Calgary ZALMI Lions. ZALMI Lions won the toss, elected to bowl first. It's going to be a very interesting game between both these sides. Knight Riders, here's the squad. Uddin Imad, Mohammad Waqas, Ali Khan, Anwar, Asim, Uddin Jalal, Shawal Khan, Kamal, Azmat, Khayyam Umair and Abhishek Patel. These are the 11 players who will be representing Knight Riders for today in this match against a very solid team. Zalmi Lions, Razwan Salim, very experienced player. Sumair Patel, Halim Affan, Zaid, Bakir Zaidi, Prateek, Mohammad Numair Khan, Jalal Bajwa, Nasir Abbas, Mansoor Bhatti, Bajwa Ahmad and Alamzeb Durrani. Today is a very special day as Royal Challenger Bangalore have won their first title of the IPL. It was a very emotional moment for all the cricket fans who have been supporting Royal Challengers and Virat Kohli supporters as well. Cricket is not just a game, it's an emotion. And we saw that today. How important is it to win this game and to feel that emotion? That's why everybody is battling for it. And these two teams on your screens will be battling hard for a win. Prateek Marathe looks like he's gonna open the attack for the bowling. Bakir Zaidi, he's captaining Zalmi Lions now, and he's a very good batsman and also a very good leader for his team. Tries to go into the thought process of what bowler is thinking, and then they make up a plan, try to set fields according to that, and execution of the plans. So it's a whole lot process that goes into it, and it works out pretty nicely if your bowlers can execute the plans. Like today as well, we saw that in the final. RCB scored 190. Everybody was thinking they're 10-20 short, but their bowlers were able to execute the plans, and that's how they were able to get that win. So any score is defendable if you're able to execute your plans. So here we go with the first ball. Prateek Marathe. Starts off with the dot ball. First 6 overs. I always talk about the importance of first 6 overs because only two fielders are on boundary fencing, so batsmen have more opportunities to score runs. Even mistime shots can go to the boundary, so it is always good to take chances, but calculative chances should be taken. There we go. The first chance of the day and goes for the first boundary.
Interesting choice. Spinner into the attack in the power play. We don't see that a lot in Elite T20. But ZALMI Lions have gone with a different strategy, and the batsmen have started with a boundary. Uddin Imad, he's already got a second boundary. He's trying to play attacking cricket today. He's on 11 of 5 already. 4 of the first ball for the spinner. Abbas, he's not a big turner of the ball, but he can skid the ball on the right areas, and make the batsman make the mistake. And especially with the new ball, there are not many chances that you will get the turn, especially on this matting. So, because the ball doesn't grip that much, it just skids on with the shine. But Mohammad Waqas, he had a brilliant season, the last one, 2024. He's a pick of the batsman for Knight Riders. Always plays crucial knocks for their team. They've got a slip in place now, but he's bowling from over the wicket. He should come from round the wicket, but I don't know why he's not doing so. They've got a long on in place. We'll just get a single on that. So, not a bad over after getting hit for that boundary. He's given only 2 singles after that boundary on the first delivery. They're having a slip for a left-hander, but not for right-hander, because they know right-hander will like to slog. They won't try to defend much. Here we go. It shuffles across. Wide given by the umpire. So 7 came off the previous over. They've already got 7 of this one in 5 deliveries. Last one to go. A quicker run and a dot delivery to end the over. It's 14 for no loss at the end of 2. Start of the third over, Pratik Marathe comes back into the attack, has been smashed away by Mohammad Waqas for a first maximum of the day. It was right in slot for him, and there was no fielder. They had a fielder on mid-wicket, but not on square leg. So there was no chance for the mid-wicket fielder to cut that off. And they've already got the first maximum of the day. We have seen 170, 175 is a pretty good total here. So if Knight Riders can put that on the board, they'll be very happy and they can put some pressure. ZALMI Lions are a very strong side. They can even try to chase that total, but Mohammad Waqas is on fire today. He smacked another one for a boundary. Back-to-back boundaries, 10 and 2.
He's not holding on to his shots. He likes to play aggressive cricket, and this is what he'll continuously do because there are only two fielders on the boundary rope. So he has more and more chances of getting those boundaries, which he will utilize in this power play. Again, he plays that, and again a boundary. 6-4-4. This is getting a big over. They've already got 14. You can see Pratik Marathe having hands on his head because he has no clue what to do against Mohammad Waqas. He's just swinging the bat so hard. He's getting boundaries for fun. Look at the run rate. It's 11.2. Look at the scorecard. It was 14 for no loss at the end of 2 overs, and suddenly the game has changed. The run rate has changed. He's pitching outside leg. We'll get a single off that. 15 runs to a bowler who is in form, who's one of their main bowlers. That's why he's bowling with the new ball. If you can put pressure on the new ball bowlers, you're well in the game. You're well dominating the opposition. He's not getting any swing today, Pratik. Usually he gets some shape in the start with that new ball. He's trying to shine that, but he's not able to find any swing that can trouble the batsman. This was again pitched up, driven away for a single to end this over. That's a big over. 16 coming off that. It's 30 for no loss at the end of 3. Again a big shot to start the 4th over as well. But I think fielder was able to cut that off inside the boundary rope. Gave a brilliant effort at the boundary rope. And they just got a single on that. Should have been a boundary or a maximum, but just got a single. Waqas, he's on strike. He tries to go big and misses that. So we'll just get a single. So the intent is clear. They're going to go big on every ball, both the openers. They want a big power play. They want to set up that foundation for a big score so that once the middle order comes in, they can just come and maximize on that. Once again, it was played with hard hands, was not able to find the gap. Bajaj was able to stop. Again tries to go big, no timing, just a single.
He's losing his shape while trying to hit it so hard. So that is one thing he can think of while just hold on to the shape. Don't lose your shape. Just look at the ball until the last moment. This was a little quick in the air and has been smacked away once again. We will wait for the confirmation. Is it a boundary or a maximum? It's a maximum once again. Second maximum of the day for Vikas. He's on 23 from 10 deliveries, playing with the strike rate of 230. He's having no mercy on the bowlers. If you're gonna bowl bad deliveries, he's gonna put you away. He's not gonna leave you. This time, respect given to a good delivery to end this over with a dot ball. 9 coming off that. It's 39 for no loss after 4 overs. That's a first wicket. Bajwa comes into the attack, and as the attack was going on, they were trying to attack every ball. But Bajwa showed them that this is not how it goes in cricket. You cannot just attack every ball that you are facing, otherwise this will happen. Uddin Imad going back to pavilion, scoring 15 of 14, getting 2 boundaries today with a strike rate of 107. Bajwa taking the first wicket for the day for ZALMI Lions. See, they have won the toss. They have elected to bowl first. Until this delivery, it was looking like captain has taken a wrong decision, but now they have a chance to make a comeback because one of the openers is back in the pavilion. So there's a new man, Ali, who's very experienced campaigner. 91 matches, 2,800 runs. So Bajwa's got a chance to put Ali in pressure and take one more wicket before the power play ends. It's going to be very handy if they can contain runs from here and take one more wicket. 11 deliveries left in the power play. If they can stop them within 50, that'll be an amazing second half of power play for ZALMI Lions. This is the first team I'm seeing bowls 2 spinners in the power play. Usually we have seen all the teams attacking with the pacers, using that new ball for the shape, for the swing, for the seam. But ZALMI Lions, they have different plans. Flighted delivery, bowled nicely by Bajwa, asking the batsmen to hit it if they want. But
Ali, he gets off the mark with that single, playing towards long on with soft hands. Look at that run rate. It has gone down suddenly. This has been a brilliant over by Bajwa. He's taken one wicket, just given one run. Now Vakas is on strike. Plays that toward backward point region. Won't get any run. Just one more to go from this over. And this is how quickly this game changes. A ball or two before you feel like you're on the top of your game, and suddenly after two deliveries you feel like you cannot hit the ball, you cannot even take a single. This is how cricket is. Nice delivery, flighted once again, forcing the batsman to make mistake. Dot ball, what a brilliant over by Bajwa, just giving one of it and taking one important wicket. New bowler comes into the attack. Left arm spinner. And starts off with a short pitch delivery. And it's a misfield which will result in a boundary. Captain not very convinced. Straight away field changes because this is not acceptable. ZALMI Lions were just building some pressure after that brilliant over from Bajwa, and suddenly you do a misfield like this. You cannot afford that, especially against a new batsman. You allow him to settle, which obviously captain doesn't want. He's got a slip in place, and Bhatti, he's a left arm spinner, third spinner in the power play. So it's a spin heavy side. ZALMI Lions. A quicker run this time. Those kind of misfields, you need to avoid those because fielding plays a crucial part on how you can save some extra runs for your team, how you can convert those half chances into catches, and how you can stop those boundaries and save one or two odd runs, which ends up getting a lot towards the end. The weather is pretty nice today at Inland Cricket Ground. It's 14 degrees with a little bit of wind blowing at 6 kilometers per hour. Plays that nicely, but won't get any run. They've just got 5 of this over. That too because the fielder did a misfield on the boundary. So, last ball of the power play. Big swing, but doesn't get anything on that. So it was again a good over. Back-to-back good overs by Bajwa and Mansoor. They got only 5 of that. It's 45 for 1 at the end of power play.
Bajaj comes back into the attack, starts off with the flighted delivery once again. There's started to get spin in these conditions, which is strange to see with that new ball. So he's skilled enough to spin a semi-new ball, which is only 6 overs old. Usually we see a little bit of spin starting after 10th over, but Mohammad Vikas, he was on 23 from 10, and now he's on 23 from 16. So in last 6 deliveries, he hasn't got a single run. That means he will be looking for a big shot to release that pressure. There we go. He was looking for that shot. I knew it was coming, and the wicket was calling too. Because when you have that much pressure on the batsman, the bowler is just a step away to take that wicket, and he did that. Second wicket for Bajaj. He has been amazing today. He was bowling flighted, and then a quicker one which just goes with the pace and touches the stumps. And bills are knocked over. Mohammad Vikas going back to pavilion. He was looking good, but from previous 7 deliveries, he was not able to score a run. That's why he went for that big shot, but got out on that occasion. So it's 46 for 2. Suddenly the things have changed. ZALMI Lions are back in the game. For the first 4 overs, it was 39 for no loss, and then in the 5th over, Bajaj came, just gave 1 run, took 1 wicket, and then 6th over was bowled by Bhatti. He gave 5 of that, and that's where all the pressure was building. And result of that pressure is the wicket now. Mohammad Vikas back in pavilion. Walking in at number 4 is Anwar. He's got a hell lot of experience. 212 matches, 4,200 runs. He needs to play a big knock today. His team is struggling. Both new batsmen on crease. He's one of their main batsmen, Anwar, for Knight Riders. 46 for 2. It's a spin heavy side, and the spinners, they're doing their job, especially Bajaj. Once again, a brilliant flighted delivery. He knows how to vary his pace. He knows when to bowl flighted, when to go quick in the air. He's just letting the batsman think. He's forcing the batsman to make mistakes. That is how he got Vakas's wicket. Because he knew the big shot was coming, and then he went flat in the air, and it just went on to the stumps. Once again, a dot delivery. He's into a dream spell today. Usually in the modern T20 cricket, we see bowlers going with the economy of 8.5, 9, still being considered as a good economy. That was a cheeky single. It's a good effort from the point fielder. Today in the final of IPL, they were showing stats of Bhuvneshwar Kumar in IPL 2025. And this year he gave runs with the economy of 9. And I heard the commentator saying it's pretty good. With that impact player rule coming in, and that modern cricket has got so easy for the batsman, economy of 9 runs per over is good. I got a little worried about the bowlers, that if economy of 9 is being considered as good, then we are not in the right direction. So
Bhatti comes back into the attack once again. Give 5 off his first one. Quicker in the air this time. Cuts that away. Will get 2 easily. This was towards leg side. They're again coming back for 2. They'll easily will. Because there was no square leg fielder. Running between the wickets is one of the key factors in cricket. Because if you're not able to get boundaries, you at least need to rotate the strike. That's where Mohammad Waqas was struggling. When he was hitting boundaries, he was hitting it so nicely. But when it came to rotation of strike, he was not able to rotate the strike. Out of his 23, he got 20 of the boundaries and he faced 17 deliveries. So he played around 12 dot balls in his innings, which is not acceptable. You need to rotate strike if you know bowler is bowling good, because that's another way that you can create pressure on the bowler to let him think when the strike changes again and again, then bowler has to think differently. But if you're facing all the deliveries, not being able to rotate the strike, this is what the captain wants. He wants him to bowl fuller. He goes full. Anwar was looking for a run, and they almost got it off overthrow. So after 2 doubles coming on the first 2 deliveries, again there have been consecutive dot balls. That will be last ball of the over. That's in the air, an easy catch. This was a flighted delivery, bowled very slow, maybe just around 60 Ks. Batsman had to put a lot of effort to play that away for a boundary. He's not very happy, Anwar. Very experienced batsman. Going back to pavilion now by losing his wicket. 3 wickets down for Knight Riders. He scored 5 today of 10 deliveries with a strike rate of 50. Not a good day for Anwar in the field. Asim is now coming into bat. He's also played 163 matches, scored 2,867 runs. It's a start of 9th over. Bajwa again comes back into the attack, just given 3 of his last 2 and got a single on this one. And taken 2 important wickets. 2 of the main spinners, Mansoor and Bajwa. They have taken 1 and 2 respectively. 3 wickets down. Knight Riders, they are in pressure. They need a partnership. They need quick runs in order to get to
160 or 70, which is preferably a good total here. If you want to just go at par, which is chaseable, that's a 150. But then you need to bowl very well in order to defend 150. Until 4 overs, the run rate was at around 10 runs per over. Again, very slow in the air, appeal, but umpire not interested in that. That's been his strength, the way he varies the pace. Look at how slow is he in the air. As a batsman, you need to put all your power to hit a boundary or a maximum when you're facing him. This is what his strategy is. This was a little quicker, which was timed nicely, and in the gap too. It's running way to the boundary, and they will get a boundary. Played nicely by Asim. It was not that quick, but a little quick than the previous deliveries. But it was good enough for Asim to put that away. He has conceded his first boundary for the day, Bajwa. He's almost towards the end of his spell. Look at the kind of bowling he has done today. This time slow. It was a similar delivery, the previous one, but it was quicker, so the batsman was able to time that. But this time it was slow, which is his strength. So that's why it's a dot ball. It's end of the over, 58 for 3 after 9. Bhatti once again comes back into the attack for his third over. He's taken 1 wicket. 58 for 3. Look at the run rate now. Just around run a ball. This has been played nicely. It was well outside the off stump, but he got enough time on that because the ball was flighted. So he had the time to shuffle across and play towards the countryside region where there was no fielder that was going to stop that boundary. His second boundary for Ali. He got 1 in the previous over as well. Again, a quicker one. He was hesitating a little to get that run. But now these two batsmen, Asim and Ali, they'll need to make a partnership here so that Knight Riders, at least for the finishers to come in. That's in the air, chance of a wicket once again. But there was no fielder there. It was chipped in the air by Asim. Just a check shot, not a full shot by him. Quicker run outside off stump given wide by the umpire.
Big shot once again. Fielder underneath. Takes that catch easily. Again, when we started to think that, okay, the partnership is coming, but it's not. It's fourth wicket for ZALMI Lions. Mansoor Bhatti. He's been brilliant today. Bajwa Ahmed and Mansoor. They have been in such good form with the ball that none of the Knight Riders batsmen are able to get hold of him. Ali goes back to pavilion, scoring 14 today. 2 boundaries for him, but nothing going Knight Riders' way. This will be a wide again because the way it got away from the batsman was outside the guidelines. So last ball of the over. That's a brilliant delivery to end the over. 66 for 4. We are halfway through. This is a batting card for Knight Riders. Uddin Imad, Mohammad Waqas opening the batting. Mohammad Waqas getting 23 of 17, Uddin getting 15 of 14, and Ali Khan 14. Anwar going back for 5. They've lost 4 wickets already, and the run rate is 6.60 with only 3 extras coming up. Moving on to the bowling card. Prateek Marathe bowled 2 overs, was a little expensive, gave 23. Nasir Abbas 2 overs 16 off spin, and then these are the 2 game changers, Ahmed Bajwa and Mansoor Bhatti. 3 overs 10 for 2, 3 overs 17 for 2. And, Nasir Abbas is back into the attack once again for his 3rd over. He bowled 2 in the power play. Now he can bowl a little slower because initially in the he was bowling quicker in the power play, considering there are only 2 fielders on the boundary. So now he's got more protection and the batsmen are in pressure, and we have seen them struggling on flighted deliveries. So this is the delivery that you'll be looking. This was a carom ball, I guess, which was going away from the batsman. Uddin Jalal, new batsman. This is the line and length you want to bowl as a spinner. There's one Pakistani spinner named Sajid Khan. He looks pretty similar to him, Nasir Abbas. That's a brilliant shot by Uddin Jalal.
Played straight towards the side screen for a boundary. You cannot place a fielder there. He chose one of the safest spot to hit that boundary. First boundary for Uddin Jalal for the day. This time again, flighted and over pitch, driven away nicely by Uddin. Will it go to boundary? It will. Back-to-back boundaries and an expensive over comes to an end. 77 for 4 after 11 overs. Mansoor Bhatti once again coming back into the attack for his last over. They only play with one medium pacer, Prateek Marathe. It will be interesting to see who's the next medium pacer who's going to bowl in the death with Prateek. Because I think after these spinners are done with their overs, they'll have to bring in someone. Will that be a spinner? Or that will be a medium pacer? There was a chance of a catch with just dropped short in front of Bakar Zaidi. It's really good to see they've still got a slip in place. Bakar himself, he's standing on slip. Once again, brilliant delivery, tapped, and that's a quick run. That's chance taken by both the batsmen. They got lucky, I would say, that Mansoor was not able to collect that ball. They have to avoid these kind of risky singles. The last thing you will want is to lose a wicket by a run out, because your team is already in pressure. Trying to go big once again, Asim. They're naturally all attacking batsmen, Knight Riders. But we have seen the first 4 overs, it went their way, but after that it has been just a brilliant bowling performance by ZALMI Lions. Cuts that away. There's a fielder, so we'll just get a single on that. Look at his stats for the day. Bhatti, he's given 20 runs, taken 2 important wickets. He's bowling his last delivery of his spell. He's had a good day in the field. Again a flighted delivery, that's in the air. How far has that gone? Just towards the fielder. Striking once again, Bhatti. He's taken 3rd wicket of his spell just at the right time. He was done bowling after that delivery and he thought of taking another wicket. Another good catch by Rizwan Salim on boundary. Second one for the day for him. And it's 5th wicket down. Uddin Jalal going back to pavilion, scoring 9 today. Got 2 boundaries in the previous over. Should have
try to build up a partnership here. But what a brilliant bowling effort by Mansoor Bhatti. 4 overs, 20 runs, and 3 wickets. What else can you expect from a spinner in a T20 game? It's kind of a similar performance like Krunal Pandya gave for RCB today. He was one of the game changers. Left arm spinners are always the game changers because they have that ability to take wickets and stop the batsman from making runs. And new batsman coming in, Shawal Khan. He's played 123 games, mainly known for his bowling, but now he needs to play a part here. He needs to bat till the end with Asim at least, so that they can get to a respectable total. Nasir Abbas. He's bowling carom balls, he's bowling doosras, but not bowling off spin a lot. He's given 28 in 3.1. Once again, just a single on that. Look at the run rate, 6.65. If they continue to score with that runs, they'll be able to get around 120-25. Just a single on that. 84 for 5, just 4 coming off this over. And Nasser is also bowling his last over for the day. A dot ball to end this over, and Nasser spells for the day. It's 84 for 5 after 13 overs with a run rate of 6.46 for Knight Riders, and Nasser Abbas 4 overs 31, no wicket, but played a good part there for his team. ZALMI Lions, they're dominating Knight Riders right now. For his last over for the day, can he take 1 or 2 more wickets in his remaining 5 deliveries after this dot ball? He's been so good to see today. 10 runs, 2 wickets. They're just trying to play safe against him. But it's going to be interesting to see who's going to bowl next 6 overs. Because they got Pratik Marathe, who's got 4 overs to bowl. 3.3, 10 runs, 2 wickets for Bajaj.
Oh, that was almost played on. He got lucky there with that single. Shovel goes off strike. He's on 3 from 7, and Asim, who's been there for a while now, played 13 deliveries, 13 runs. He should be the one looking to bat till the end, till the last ball of the 20th over. That's the only way to get to a good total, because if you want to win a battle, you have to be in the battlefield. If you go out of the field, then there's no more war happening. So just one coming off this one in 5 deliveries. What a brilliant spell. Even if he gets hit for a maximum on this one, which is hard, just guides that toward the point, ends his over and spell with the single. But Ahmed Bajwa ends his 4 overs, 12 runs and 2 wickets. He had an amazing day in bowling today. ZALMI Lions, they won the toss, elected to bowl first. And this is what a captain would like to see when you elect to bowl first after winning a toss. He's one of the senior bowlers for his team, and look at him. He's now trying to explain how the wicket is behaving to the new bowler, because this new bowler is going to bowl his first over of the day, and it's 15th over of the innings. So it's going to be interesting to see if he can catch up on the momentum that spinners have provided. And then another spinner. He goes big on that, and straight into Nasser Abbas' hand. What a brilliant catch. What a start to a new over for a new bowler. Asim, who was on strike. Mohammad Numair is a new off spinner. It's a spin heavy side, as I already mentioned. This is their 4th spinner for the day. And look at how he has started. He has started with the wicket. 6 down, Knight Riders. Asim just getting 14 today. He was struggling because the whole team is struggling. They're a good side, Zalmi Lions. They know how to convert half chances into catches. But this was a pretty straightforward catch, which obviously was need to be completed. But from a team like Zalmi Lions, you obviously expect them to take those chances. Kamal, he's played 164 matches, again known for his bowling, because now they've lost 6 wickets. So we are towards the tail enders now. Were mainly known for their bowling, but now being forced to bat by such brilliant bowling by Zalmi Lions. So Mohammad Numair, what a start for him. Let's see how he goes on the second delivery of his spell. Again goes flighted, play and miss. We have seen more slower you bowl, more chances you create for the wicket, and it's hard for the batsmen because they're not able to generate that power today to hit that flight and attach a flight number to the ball, but it has been working out for the bowlers because they have done a good job here. Big swing of the bat once again. Again, it was always feeling like it's coming and coming and coming, but it was not. Just around 55 Ks, 60 Ks an hour. He's bowling at maybe slower than that.
We don't have a speed gun here, so we don't know the exact pace. I'm just assuming he's bowling at that pace. Again, this time a little quicker. This is how they have troubled the batsmen today. They'll ball 2 or 3 flighted deliveries, then suddenly they'll come up with a quicker one, which troubles the batsmen because they seem like they're not ready for that. This is again quicker and short. Appeal, but nothing given by the umpire. Once again, can this be a wicket maiden? 5 deliveries, wicket on the first one, 4 dot balls. Is it a wicket maiden coming? No, it will not be a wicket maiden, but it's still what a brilliant over bowled by Mohammad Nameer, just giving one of that and taking 1 wicket. The attack. So we are left with the last 30 deliveries of this innings. 15 overs have been bowled, and they've been able to score 87 off 6. Starts off with this double on this occasion for 16th over. Prateek was expensive in the power play. Gave 23 without taking any wicket. Usually he's pretty good in the power play and the death overs. That's why he's one of the medium pacers playing. Inside edge of the bat. Just get a single on that. They're 90 for 6. Still 28 balls to go. If they're able to play 28 deliveries, they should be able to score around 40 runs if they don't lose all the wickets. And if they are able to get around 130, which will be at least a fighting total, not a good total, I would say. But at least you will give something to your bowlers to fight when they're there in the field. That's in the air. Obviously, no one can get that off. Lands in the low man's land area. So, will be a double here. Shawal Khan. He will come back on strike with that double. They've taken 5 runs off this over in 3 deliveries, which is not bad at all. If they can get another boundary here, they'll be cherry on top for this over, because it has been a problem with Prateek today. He's been struggling to get his line and length. The same try to go for Yorker, slower Yorker. That's a big shot once again. A chance of a catch. This time it's dropped. Prateek is not very happy with that, because this is the first time he created a chance of a wicket. And the fielder has dropped a sitter. They have been doing some good catching today, ZALMI Lions.
apart from this one. So the timeline for the over looks like 2-1, 2-1, 2. So they got 8 runs off this over. Inside edge of the bat ends with the dot ball, so it will remain 8 runs. 95 for 6 at the end of 16. Nomer once again comes into the attack. That was a hard call for the bowler, I would say. Didn't seem to be a wide to me. He bowled a brilliant one the previous over. Just gave one of that, took 1 wicket. Look at the flight he's giving. He's bowling at superb pace. He knows what the batsmen want, and he's not giving that to the batsman. That is what you need to do as a bowler. He's bowling so slow in the air. Look at that once again. He's asking the batsman, if you want to hit me, put in all the power you have and try to clear the boundary. If you don't have that, just continue to play the dot balls, otherwise you'll lose a wicket. Look at that. You cannot place those short on such slow deliveries. That shouldn't be a wide. That shouldn't be a wide. This is what Numair is saying. We don't have a DRS for a wide. He shuffled across so much. Bakir is going to the umpire, telling them that he has shuffled a lot. He's having that little conversation. He's saying he's okay with this call, but at least you should think for bowler as well. Even the first one he gave was a close one, but this one for sure was not a wide. Because when batsman shuffles across, there's an imaginary revised guideline that you have to follow. Because otherwise, the batsman will shuffle across all the time, and then bowler just can't ball wicket to wicket all the times. They're going back for a run. Can be a run out. Wicketkeeper misses that. So with that double, it will be 100 up for Knight Riders for the loss of 6 wickets. Still 21 balls to go in this innings. Big swing off the bat. He was trying to slog that away. Completely misses. He's disappointed. This is what he's doing, Mohammad Umair. He wants you to put all the power you have. And that's where he's winning the battle. Look at that. Once again, this was a full toss and has been smacked away. You cannot at least bowl a full toss. Don't take it that casual. Kamal was right on it. He's at least got a power to put the full toss away. He was unhappy with himself on the previous delivery where he missed that slog sweep. But he's very happy with this one. They've got 11 runs off this over, which is not bad at all. They're at 106. They've still got 19 more balls to go, which is a good thing. At least they're fighting hard for their team. And this time again, it has been played over the fence. What a brilliant shot. How many times you see a off spinner being hit over the cover fielder for 6? This is one of the occasion. Back-to-back sixes
for Kamal here. What a brilliant way to end that over. They got 17 runs off the previous one. It was an expensive over. Pratik Marathe comes in for his last over of the innings. It's his last over of his spell. He's appealing big. He thinks there's a little nick that the batsman had. Keeper is asking the batsman to tell. Obviously, he won't tell. But they got a dot ball. So 17 more deliveries to go from here. How many runs can Knight Riders score? They got 2 maximums in the previous over. It was a big over that they needed desperately. That's in the air once again. No timing on that. Will come back for 2. That was wide outside off stump. Shuffles across, appeal, and it's out, given by the umpire. Finally a wicket. Look at him celebrating that wicket. He's got expensive today. 34 runs off his 3.3. He was waiting for that wicket. And it's 115 for 7. That partnership is broken. Kamal and Shovel, they will try to bring up a total here which could be a fightable total, but Shovel goes back. He's scoring 8 today from 14. LBW by Pratik. Khayyam Umair comes into bat at number 9.
Again, trying to go for a big shot here. Kamal misses that once again. This will be last ball of his spell. Pratik Marathe has given 35 and taken one wicket. Who's going to bowl the last over? That's going to be very interesting to see. It's probably next one. Mohammad Nubair is going to bowl that. But who's going to bowl the last over of the inning? That's a big shot once again. Fielder was there, so they'll just get a single. But Kamal has played some brilliant shots today. Single on that, 117 for 7 at the end of 18. Halim Afan comes into the attack for his first over and will be his last over as well. It's interesting, a bowler like him not bowling many overs today, because the spinners have done a great job today. Swing of the bat, stepping out of the wicket, will get a double. So with the double, they're at 120. Still 8 more balls to go. Can they get 20 more runs, or am I asking too much? Because if they can get 20 more, it will be a great comeback by Knight Riders. But if they lose the wickets, then they'll have to do a lot of hard work in the bowling. Trying to go big, and edge of the bat. He will go back to Pavilion Khayyam. First wicket for the day for Halim Afan. Knight Riders 8 down now. Azmat is the new man in at number 10 for Knight Riders. Plays that towards long on just for a single to get off the mark.
Trying to go full on leg side, or maybe going for a Yorker. Misses the line there. Halim. Big shot once again. Fielders will cut that off easily. We'll just get double on that. It's a good throw by Nasser Abbas. He's given 7 of this over. One more to go. And then last 6 deliveries. Will Mohammad Numair bowl last 6 deliveries, or will somebody else come in to fill in those last over? Slower one. We'll just get a single. And that is an overthrow, but they won't take a run on that. So 8 coming off that and a wicket. It's 125 for 8 after 19. Of this innings, and then we'll be seeing ZALMI Lions chasing the total 125 for 8. How many more can they add from here? If Kamal stays on strike for most of the deliveries in this last over, then they can get around 135 at least. That's played nicely, and fielder won't be able to stop that. That will be a boundary on the second ball of the last over. Now the score is at 129. Kamal, he's playing a special knock here for Knight Riders. He's on 29 from 20. Considering the situation and the circumstances he came into bat, it's been so good to watch him play that way for his team, and being able to fight for those runs. Trying to go big once again. We'll just get a single on that. Azmat wanted a second one. He wanted Kamal to come back and face that, but there was no chance they were getting second. So Azmat will obviously try to go big, but if not big, if he doesn't trust his abilities to clear the boundary, then he can at least just take a single and let Kamal face the remaining 2 deliveries. But will be interesting to see. At least don't lose a wicket here, because these 3 deliveries are very important for Knight Riders. He goes big on that. A chance of a wicket. Captain Bakir Zaidi. He doesn't drop chances like those. This is the only thing that they didn't wanted, Knight Riders, that losing a wicket. Now they have lost the wicket. New batsman will come. They already lost 1 ball. And now the new batsman will come and he will be on strike. So even they might lose the remaining 2 deliveries as well. Azmat going back to pavilion. Just scored 1 today. Caught by Bakir. Bowled by Sumair. Abhishek is coming into bat. Doesn't have much time left. Or not
Gonna face many deliveries, but last two deliveries, can he put some impact? Can he get a boundary? That's the question. Or will he lose his wicket and they'll be all out? There are a lot of questions, but this ball can be the answer. Again, just a single. So one good thing that Kamal will be facing the last delivery of this innings. If he can smack a maximum or a boundary on this one, that can be a brilliant finish from being 89 for 6, around 15-16 overs. They were nowhere near, but now at least they have something to fight for. Last ball. He plays that towards square leg. The ball is going to the boundary and they have got a boundary. This is what they wanted. He placed that so nicely. He was waiting for that ball. The ball was short pitch. It was off cutter. And he timed that, placed that. Everything was perfect. And what a brilliant knock by Kamal. He scored 34 of 22. Very important 34 for his team. They have finished at 135 for 9 for 20 overs. ZALMI Lions, they won the toss, elected to bowl first. Now, when they'll come to chase this, they'll have to chase down 136 from 120 deliveries, which should not be a very hard task to do. But if Knight Riders can pull off some wickets in the power play, it can be a challenging chase. We'll move on to the batting card. This is Knight Riders, Uddin Imad 15, Mohammad Waqas is 23, Ali scoring 14, Anwar getting 5, Asim getting 14, and then Uddin Jalal 9, Shawal Khan 8, and that important 34. Highest score for his team for the day, Kamaluddin. We'll move on to the bowling card. It was all spinners who made an impact today. Prateek Marathe 4 overs 36, 1 wicket. Nasir Abbas 4 overs 31, no wicket. Ahmed Bajwa, one of the best bowlers for the day. 4 overs 12, 2 wickets. 4 overs 20 for 3 for Bhatti Mansoor. 2 overs 18 for 1 for Mohammad Numair. Halim Affan and Sumair bowling 1 each and taking 1 wicket. So we are heading towards the innings break, and once we are back, you'll be seeing ZALMI Lions chasing 136 from 120 balls.
स्वागत है एक बार फिर से लाइव ब्रॉडकास्ट में. दिस इज Elite T20. You're watching 22 yards broadcast. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए. स्ट्रीम को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ. चेज़ शुरू करने जा रहे हैं. 136 रन का टारगेट 20 ओवर में. रिजवान सलीम और सुमेर की ये जोड़ी शवल खान करेंगे गेंदबाजी की शुरुआत नाइट राइडर्स के लिए. स्विंग मिलती है इन्हें हवा में और उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए. वाइड से शुरुआत हो गई है इस इनिंग की और खाता खुल चुका है. राइट हैंडर के लिए गेंद अंदर आता है और लेफ्ट हैंडर के लिए वो हवा के साथ बाहर जाती है इनकी गेंद. वो नेचुरल एंगल है इनकी गेंदबाजी में. एक बार फिर से अच्छी गेंद. सुमेर यहाँ से चाहेंगे ज़ाल्मी लायंस जिन्होंने टॉस जीता था. एक कम टोटल पे रोका है. शायद कैप्टन थोड़े से निराश होंगे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये टोटल 120 या उसके नीचे रुक जाना चाहिए था. जिस तरह की पकड़ बनाई थी, विकेट्स आई थी शुरुआत में, लेकिन 135 बना पाए नाइट राइडर्स. एक बार फिर से अच्छी गेंद. इस बार हल्के हाथ से खेला और बल्ले से खाता खोला. ऑफ स्ट्राइक होंगे सुमेर. रिजवान सलीम एक अटैकिंग बैट्समैन, अच्छी शुरुआत देने के लिए जाने जाते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी में. बड़े रन्स के लिए जाने जाते हैं. 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड इनके नाम है. एलीट T20 वो शायद 35 ओवर्स की गेम थी, लेकिन गेम कोई भी हो, 6 गेंदों में 6 छक्के इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट. किसी भी गेंदबाज के सामने 6 बड़े हिट्स, वो भी 6 कंसेक्यूटिव बॉल्स पे, एक स्पेशल टैलेंट कर सकता है और वो टैलेंट है रिजवान सलीम. ये बड़ा शॉट लगाने का प्रयास. स्ट्रेट अवे इनको अटैक करना पसंद है. जैसा कि मैंने बताया, पहली गेंद पर ही चौका मिलेगा. ज़रूर उस तरह से नहीं जिस तरह से चाहते हैं, लेकिन चौका चाहिए था. चौका मिला है. पहला चौका इस इनिंग का. शुरुआत तो नाइट राइडर्स की भी बहुत शानदार हुई थी. शुरुआत आज पंजाब किंग्स भी बहुत शानदार करके गए थे, लेकिन जब तक वो आप फिनिशिंग टच नहीं दे पाते हैं अपनी इनिंग को, तब तक आप मुकाबले में जीत नहीं हासिल कर पाते हैं. इन स्विंग यहाँ एंगल से अंदर आती है इनकी गेंद. 5 गेंदों में 6 रन आए हैं. वो चौका लकी रहे वहाँ रिजवान. बहुत बड़ा शॉट, कमाल का शॉट है ये. टाइमिंग देखिए उस पे, बहुत शानदार. स्लॉट में थी उनके और फील्डर तो छोड़िए, बाउंड्री कम पड़ गई वहां. 12 रन पहले ओवर से बिना किसी विकेट के.
नया गेंदबाज कमाल आए हैं और शानदार शॉट से शुरुआत हुई है चौके से। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे आए थे 6 रिजवान के बल्ले से। इस ओवर की पहली ही गेंद पे उद्दीन कमाल, जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से वो इम्पोर्टेंट रन ऐड किए अपनी टीम के लिए, उनका स्वागत किया है चौके से। सुमेर की आज के दिन की पहली बाउंड्री। फिर से कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे, मिस किया इस बार। अच्छी गेंद एक बार फिर से, जिसको सम्मान दिया सुमेर ने। गेंद को आखिरी वक्त तक देख रहे हैं। हल्के हाथ से खेला है यहाँ एक बार फिर से। उस चौके के बाद अच्छी वापसी की है। It's 16 for no loss, 1.4 overs. वाइड गेंद का इशारा होगा। फिर से हवा में गेंद है, इस बार कैच का मौका और पहली सफलता नाइट राइडर्स के लिए। बाहर जाएंगे सुमेर, पहली विकेट खो दी है। लगातार बाउंड्री ढूंढ रहे थे, पहली गेंद पे जरूर आई थी बाउंड्री, लेकिन ये गेंद बॉडी लाइन की तरफ रूम नहीं मिला और उसे सीधा खेल बैठे मिड ऑन के फील्डर के हाथ में, जिन्होंने कंप्लीट किया एक अच्छा कैच। और वापस जाते हुए अली थे वहाँ, जिन्होंने वो कैच कंप्लीट किया। और सुमेर वापस जाते हुए एक चौका इनके बल्ले से आ जाया। हलीम आए हैं बल्लेबाजी के लिए नंबर 3 पे। आखिरी गेंद खेलेंगे इस ओवर की। विकेट गिरा इससे पहले से हल्के हाथ से खेल के सिंगल चाहते थे, रिजवान ने मना किया।
डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त, एक सफल ओवर समाप्त जिसमें सिर्फ आए 5 रन और एक विकेट। शेवल खान एक बार फिर से अटैक में। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास ज़रूर, बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी, सिर्फ सिंगल मिलेगा। 18 पे पहुंचा है ये टोटल। एक विकेट खोई है पिछले ओवर में। अच्छी इन स्विंगिंग गेंद जिसको सीधे बल्ले से खेला एंड सिंगल बटोरा आज के अपने पहले रन अपने नाम करते हुए। पहला ओवर थोड़ा सा महंगा था, उसके बाद एक अच्छी कमबैक हुई है पिछली कुछ गेंदों में। अगर 2 विकेट और निकाल सकते हैं नाइट राइडर्स इस पावर प्ले में तो गेम बदल सकते हैं अपनी टीम के लिए। अच्छी गेंद, एक बार फिर से रिस्पेक्ट दे रहे हैं रिजवान भी, कह रहे हैं कि ये अच्छी गेंद थी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझें गेंदबाज की स्ट्रेंथ को एंड फिर अपनी स्ट्रेंथ को बैक करके वो इम्पोर्टेंट रन्स बनाए अपनी टीम के लिए। एक बार फिर से बिल्कुल सीधा खेला, विल बी जस्ट अ डॉट बॉल वंस अगेन। 2 रन आए अभी तक इस ओवर से, एक गेंद बाकी है। पहले ओवर से 12 रन आए थे। द चेजिंग 136, तो रन रेट तो इतना बड़ा इशू है नहीं। लेकिन अगर यहाँ विकेट गिरते हैं और इसी प्रकार के ओवर जाते हैं तो वो रन रेट ऊपर चली जाएगी। गैप में खेला सिंगल के साथ, ओवर समाप्त। सिर्फ 3 रन आए उस ओवर से। इट्स 20 for 1 एट द एंड ऑफ 3 overs।
चौथे ओवर की शुरुआत, हवा में गेंद, कैच, और ये कमाल का कैच कंप्लीट किया। एक बार फिर से टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं थी, सिर्फ चेक किया था उस शॉट को। क्या ये गेम चेंजिंग कैच हो सकता है? आई गेस अनवर थे वहां फील्डर जिन्होंने वो कैच कंप्लीट किया कवर्स के क्षेत्र में। उद्दीन कमाल, आज कमाल का मैच रहा है इनका। पहले बल्ले से 34 रन, अब दो बहुत बड़े विकेट। रिजवान सलीम का ये विकेट, 9 गेंदों में 12। निराश पवेलियन लौटते हुए और कैप्टन बाकिर जायदी नंबर 4 पे अंदर जाते हुए। क्रिकेट एक ऐसा खेल जहां खेल कभी भी पलट सकता है। 199 मैचेस का एक्सपीरियंस, 4269 रन, बहुत सारे रन्स जड़े हैं, लेकिन आज ये चेज बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल रहेगा, क्योंकि गेम को लंबा लेके जाते हैं। ये गेम को अंत तक लेके जाते हैं, फिनिश करना पसंद करते हैं। चेज हर किसी के बस की बात होती नहीं है, चाहे वो छोटा टोटल हो या बड़ा, क्योंकि अगर विकेट्स गिरते हैं तो वो ऐसी डिस्कशंस में बदल जाती है चेज। बहुत रिलैक्स्ड मूड था कैंप में जब गेंदबाजी करके आए थे, लेकिन अब इन दो अर्ली विकेट्स पावर प्ले में खोने के बाद थोड़ा सा यहाँ टेंशन का माहौल बना है इनके पवेलियन में भी। और ये दो बल्लेबाज जो इस समय क्रीज में हैं, ये बैकबोन है जालमी लायंस की। अगर इनके विकेट मिल सकते हैं या इनमें से कोई एक अगर पवेलियन भेज सकते हैं नाइट राइडर्स, तो ये गेम में पूरी तरह से वापसी कर लेंगे। फिलहाल वापसी तो कर ली है। इट्स नेवर इजी टू प्ले अगेंस्ट नाइट राइडर्स बिकॉज ये रात ढलते ढलते चकमा दे जाते हैं सबको। कट किया यहाँ, रन कोई नहीं मिलेगा, लेकिन बाकिर का फॉर्म में रहना बहुत ज़रूरी, नॉट ओनली फॉर दिस मैच बट फॉर द होल टूर्नामेंट। क्योंकि अगर इनका बल्ला चलेगा तो लीडर लीडिंग बाय एग्जाम्पल का झंडा लहरा सकते हैं। मिड ऑन पे खेला और सिंगल मिलेगा, लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी की है कमल ने। पहले बैट थामा तो रन्स बना दिए, अब गेंद पकड़ी है तो विकेट्स निकाल दिए। 21 रन 2 विकेट इस समय स्कोर ज़ालमी लायंस का। 136 चेस कर रहे हैं। हवा में गेंद थी, थोड़ी देर के लिए सांसें जान हलक में थी। कैच की आवाज भी आई थी, लेकिन ये चौका मिल जाएगा क्योंकि ये पावर प्ले है, फील्डर वहां कोई है नहीं। तो मिस टाइम शॉट्स, हाफ चांसेस भी चौके में तब्दील हो जाते हैं। अच्छी गेंद इस बार, बैक ऑफ लाइन डिलीवरी, अच्छा स्मूथ रन अप है इनका, और स्विंग भी अच्छी मिलती है, लाइन और लेंथ कमाल की एग्जीक्यूट की है। डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त होगा। विकेट आई उस ओवर में 25 पे 2, 4 ओवर के बाद।
4 ओवर 25 पे 2, तीसरा ओवर करेंगे। विकेट ज़रूर नहीं मिली है शवल को आज, लेकिन पिछला ओवर बहुत अच्छा था। वो कैच बहुत कमाल की पकड़ी गई पिछले ओवर में रिजवान सलीम की, जिसके चलते उन्होंने अपना विकेट खोया। हवा में गेंद है, ये कैच का मौका, ये मैच भी हो सकता है। ये सिर्फ कैच नहीं, ये मैच लग रहा है मुझे। बहुत बड़ी विकेट, कैप्टन बाकिर जैदी पवेलियन लौटते हुए। खराब शॉट, जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। यहां 25 पे 3 हो गए हैं नाइट राइडर्स, और एक दम से या उनके खेमे में खलबली सी मच गई है। सभी पैड अप होना शुरू हो गए हैं। कहीं ऐसा ना हो ये ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएं। एक बहुत खराब शॉट, सिर्फ एक रन बनाया। मोहम्मद वकास का अच्छा कैच। शवल अभी जिनकी बात कर ही रहे थे कि विकेट नहीं मिली आज, और जब विकेट निकाली है तो कितनी बड़ी विकेट निकाली है। बाजवा बल्लेबाजी के लिए अब आते हुए 147 मैचेस, 1798 रन। लेकिन ये गेम ऑन कर दिया है। 25 for 3। क्या ज़रूरत थी उस शॉट की, वो तो शायद अपने आप को क्वेश्चन करेंगे कैप्टन। लेकिन अब तो विकेट चली गई है। 25 पे 3 है। अच्छी गेंद, देखिए सडनली T20 टेस्ट मैच में कैसे तब्दील हो जाता है। वो कुछ विकेट्स की बात होती है, वो प्रेशर की बात होती है। आउटसाइड ऑफ स्टंप, बहुत ज़्यादा रूम वाली गेंदों को भी बल्लेबाज छोड़ देते हैं जब इतना प्रेशर हो। लेकिन दाद देनी होगी इस ओपनिंग स्पेल की। यही बात की थी मैंने कि पावर प्ले में अगर 2 से 3 विकेट तो ये गेम ऑन। वही हुआ। अच्छी गेंद, एक बार फिर से पूरी तरह से फील्डर्स उत्साहित हो गए हैं। वो जानते हैं उस पिछली विकेट की अहमियत, कितना बड़ा झटका है वो। 4 गेंदें हुई हैं इस ओवर में, रन एक भी नहीं, और एक बहुत बड़ी विकेट। बैकफुट पे गए, बैकफुट पॉइंट की दिशा में, गैप में जा रही है, 2 रन के लिए वापस आएंगे। थोड़ा सा मिक्सअप, थ्रो अच्छी होती तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। मतलब आखिरी गेंद बाकी है सभी ओवर की। पावर प्ले में तो वो जीत हासिल की है नाइट राइडर्स ने, ऐसा कहूँगा। अपनी बल्लेबाजी के भी पहले 4 ओवर पावर प्ले के बहुत शानदार गए थे। उसके बाद विकेट्स खोई और 135 पे रुक गए 20 ओवर के बाद। लेकिन जब केन से पावर प्ले आया तो वो भी बहुत शानदार। ये इस बार देखिए फिर से बहुत शानदार लाइन और लेंथ। ओवर समाप्त, कमाल का ओवर, सक्सेसफुल ओवर। 1 विकेट आई उससे और सिर्फ 2 रन।
वाइड गेंद से शुरुआत। खैम उमेर नए गेंदबाज। एक और वाइड, बैक टू बैक वाइड्स ये नहीं करना चाहेंगे ऑब्वियसली आप, बिकॉज वो विकेट्स मिली हैं 3 विद इन अ स्पैन ऑफ 2 और 3 ओवर्स। इम्पॉर्टेंट बैट्समैन बाहर गए हैं, तो इस प्रकार से तो आप रन नहीं देना चाहेंगे। हवा में गेंद, किनारा लगा, ये गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। क्या चौका मिल जाएगा? जी हाँ। आउटफील्ड पिछले सीजन से बहुत बेहतर है इंग्लैंड क्रिकेट ग्राउंड की, जिसके चलते बल्लेबाजों को थोड़ी सी एडवांटेज हुई है कि ऐसे शॉट्स भी चले जाते हैं चौके के लिए। तो एक गेंद में अब 6 रन आ गए हैं 2 वाइड्स और चौके के बाद। अच्छी गेंद ये। बहुत शानदार शॉट ये, बहुत खूबसूरत शॉट। 10 रन आ गए हैं, ये महंगा ओवर। 4 गेंदों में 10, 2 चौके, एक एज ऑफ द बैट से, एक मिडल ऑफ द बैट से। फुल टॉस थी इस बार, कुछ अनोखे ही अंदाज में खेला उसे। फील्डर वहाँ कोई था नहीं, तो 2 मिल जाएंगे। ओवर की समाप्ति, 12 रन आए उस ओवर से। It's 39 for 3 at the end of 6 overs, which is also the end of power play. और यहाँ से जीतने के लिए 97 more runs required. अजमत गेंदबाजी के लिए 7वां ओवर, स्पिन फाइनली देखने को मिली है। बहुत कंट्रास्टिंग है गेंदबाजी यूनिट, जहाँ जितना स्पिन हैवी था सालमी लायंस का बॉलिंग अटैक, वहीं उतना ही पेस पे ज़्यादा विश्वास दिखाया है अजमत।
अगर यहाँ से अच्छी गेंदबाजी कर पाते हैं, एक दो इम्पोर्टेंट विकेट्स दिला पाते हैं अपनी टीम को, तो बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा नाइट राइडर्स पे उसका। एक अच्छे गेंदबाज हैं, अपनी पेस को वेरी करना जानते हैं, और आज की इस मॉडर्न डे क्रिकेट में बीइंग अ स्पिनर पेस को वेरी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सेम पेस पे गेंदबाजी नहीं कर सकते। अगर आप फ्लाइट दे रहे हैं तो आप ये नहीं कि छः की छः गेंदें फ्लाइट देते रहेंगे, यू विल हैव टू गेट वन और टू क्विकर। फिलहाल यहाँ पहली दो तो फ्लाइटेड रही हैं, ये तीसरी भी इस बार ये गूगली थी, रॉन्ग अन यहाँ देखने को मिली, जो पढ़ने के बाद थोड़ा अंदर आई। एक अच्छे गेंदबाज दिखते हुए अजमत नाइट राइडर्स के लिए। फिर से फ्लाइट और सिंगल। खेला उसे कवर्स पे हल्के हाथ से। बाजवा अपना समय लेते हुए बहुत ज़्यादा फ्लाइट दे रहे हैं हवा में, ये भी वैसे ही फोर्स कर रहे हैं बैट्समैन को कि मारिए आप में दम है तो। और यहाँ डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त। अभिषेक आए गेंदबाजी के लिए, बहुत खराब गेंद से शुरुआत की अपने स्पेल की, और हलीम अफान जैसे बल्लेबाज उनको छोड़ेंगे नहीं। वो वेट कर रहे थे, काफ़ी देर से खराब गेंद मिली नहीं थी और अब फाइनली मिली, तो उस पर कूद के पड़े हैं फाइनल के। और स्क्वायर लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में एक अच्छा मैक्सिमम आया, 47 पे पहुंचा, ये टोटल 22 पे पहुंचे हैं हलीम। 89 चाहिए यहाँ से जीतने के लिए, और हलीम का विकेट चाहिए नाइट राइडर्स को जीतने के लिए। आर्मर थी, तेज गति की गेंद। अच्छी गेंद, इसको खेला लॉन्ग ऑन रीजन में, सिर्फ सिंगल मिलेगा। स्लॉक किया है यहाँ, लेकिन फील्डर है, सिर्फ सिंगल मिलता हुआ।
अच्छा शॉट, ये बहुत कमाल का शॉट, वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप थी वो गेंद, फुल लेंथ की, ओवर पिच भी कह सकते हैं उसे, और चौके के साथ ओवर समाप्त। 6 के साथ शुरुआत हुई थी, चौके के साथ समाप्ति। फुल टॉस, फील्डर है वहाँ, मिस फील्ड हुई है और 2 के लिए वापस आ जाएंगे। अजमत पहले ओवर में 2 रन आए थे उनके, 81 रन चाहिए, रन रेट थोड़ा सा ऊपर गया है, लेकिन जितना करंट रन रेट है कुछ उतने ही रन चाहिए। उससे बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, फुल टॉस, बहुत अच्छे तरीके से खेला उसे, फील्डिंग में शानदार एफर्ट वहाँ, यकीनन 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। उससे फ्लाइटेड डिलीवरी मिल जाएगा एक और रन। 6 रन आ चुके हैं अभी तक इस ओवर में, आखिरी गेंद बाकी है। 59 पे पहुंच गया ये टोटल 3 विकेट पे। बहुत कमाल की गेंद है। दिस इज द लाइन एंड लेंथ एवरी लेग स्पिनर वांट्स टू बॉल। ओवर थ्रोज के चलते दूसरा रन भी मिल जाएगा। नाराज है अजमत क्योंकि वो एक ही रन बनता था एक अच्छी गेंद पे, लेकिन 2 आए उस पे, तो 8 रन आए पिछले उस ओवर से। इट्स 61 for 3 एट द एंड ऑफ 9 overs।
अनवर गेंदबाजी अटैक में 10वां ओवर टीम का। एक यहाँ पार्टनरशिप बनती हुई हलीम और बाजवा के बीच में। एक समय पे 25 पे 3 विकेट हो गए थे, उसके बाद ये पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट थी। हलीम अफान एक बार फिर से सीनियर बैट्समैन, हवा में गेंद है। ये पार्टनरशिप जो बन रही थी, टूटने का चांस था एक समय के लिए। बेहतर फील्डिंग एफर्ट की उम्मीद, लेकिन लकी है कि अभी भी क्रीज में है हलीम। इनफैक्ट बाजवा अब स्ट्राइक पे आएंगे। हलीम 22 गेंदों में 30 रन कर चुके हैं आज। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था, सिंगल लेंगे। लेकिन तारीफ करनी होगी नाइट राइडर्स की, इतनी आसानी से मुकाबला हाथ से छोड़ा नहीं है। अभी भी अगर 1 या 2 विकेट्स निकालते हैं तो दिल बी बैक इन द गेम। और क्योंकि जो रिक्वायर्ड रन रेट है इस समय इट्स जस्ट अराउंड 7, ना ज़्यादा बढ़ा है ना ज़्यादा कम हुआ है, लेकिन विकेट्स जो 3 मिले वो इम्पोर्टेंट। सामने खेला स्पिनर्स अगर यहाँ से कुछ कमाल कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाल्मी लायंस के स्पिनर्स ने बहुत कमाल किया था। वेट किया, अब जान चुके हैं उनकी रणनीति, इसलिए वेट करते हैं गेंद के लिए। उस पर जल्दी नहीं जा रहे हैं, बिकॉज द अर्ली यू गो द अर्ली यू फॉल। आखिरी गेंद इस ओवर की शफल किया and he has played that towards mid wicket. We'll just get a single. It's 65 for 3 at the end of 10 overs. We're halfway through in this innings as well. 10 ओवर बाकी हैं, यहाँ से 60 गेंदें और रन चाहिए 71 जीत के लिए। बैटिंग कार्ड पे नज़र डालेंगे, खैर पिछली इनिंग का था, और इस इनिंग ज़ाल्मी लायंस 9 गेंदों में 12 रिजवान सलीम, 8 गेंदों में 5 सुमेर पटेल, दोनों ओपनर्स ने विकेट जल्दी खोया। हलीम अफान इस समय नॉट आउट है, इनका नॉट आउट रहना ज़रूरी भी ज़ाल्मी लायंस के लिए अगर ये चेज़ पूरी करनी है तो। 23 गेंदों में 31 पे वो हैं। बाकिर ज़ायदी आज ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, 4 गेंदों में 1 रन। और बाजवा यहाँ 12 रन बना के 16 गेंदों में नाबाद। वो बाजवा अहमद थे जिन्होंने गेंदबाजी से शानदार परफॉर्मेंस दिया। ये बाजवा जलाल हैं जो बल्लेबाजी में हलीम का साथ निभा रहे हैं। बहुत सारे सिमिलर नेम्स देखने को मिल रहे हैं दोनों ही टीम्स में। लाल अजमत अपनी लेग स्पिन अपनी कलाकारी के साथ वापस आ चुके हैं। अपनी कला का जादू यहाँ चलाना होगा और विकेट निकालनी होगी, क्योंकि अगर इनके विकेट्स का कॉलम खाली जाता है तो निराश होंगे नाइट राइडर्स, क्योंकि फिर ये जीत थोड़ी दूर चली जाएगी। बहुत अच्छा स्लॉग है ये, पार्किंग लॉट में दे मारा उस स्लॉग को, बहुत शानदार। हलीम वेट कर रहे थे शायद, गेंदें तो इससे पहले भी फ्लाइटेड ही आ रही थी, बहुत धीमी गति से कर रहे थे, लेकिन ये थोड़ी सी ऊपर गिरी और वो स्लॉग में पूरी तरह से आ गई उनके। बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिमम। अजमत शायद कुछ अलग सोचना होगा, या लाइन और लेंथ में, या थोड़ी सी पेस वेरी करनी होगी, क्योंकि अब 15 गेंदें उनके स्पेल की हो चुकी हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाजों ने उनकी रणनीति को पढ़ सा लिया है। इस बार थोड़ी सी लेंथ चेंज की, क्योंकि वो वेरिएंस बहुत ज़रूरी है। फिर फ्लाइटेड ओवर पिच, इस तरह से विकेट मिलने के चांसेस थोड़े से कम।
इस बार हवा में खेल दिया है, कैच का मौका था, प्रयास बहुत शानदार, लेकिन प्रयास से यहाँ कुछ होगा नहीं क्योंकि अंपायर का इशारा चौका। 11 रन आए उस ओवर से, महंगा ओवर। 41 पे आ गए हैं हलीम, 76 पे 3-11 के बाद ज़ाल्मी लायंस। फिर से फ्लाइटेड गेंद थी यहाँ, अच्छी ड्राइव बाजवा के बल्ले से, लेकिन कोई रन नहीं मिलेगा। स्टेप आउट किया, शॉर्ट मिड विकेट का फील्डर था वहाँ जिन्होंने सपोर्ट किया उस गेंद को मिड ऑन तक पहुँचाने में, और सिर्फ सिंगल ही मिलेगा। लेकिन हलीम पिछले ओवर में एक मैक्सिमम, एक बाउंड्री, तो हाथ खोले हैं ज़रा इन्होंने, अप्रोच चेंज की है थोड़ी सी बस 10 ओवर के बाद। ये अच्छी गेंद थी। 59 चाहिए यहाँ से जीतने के लिए, रन रेट जस्ट अराउंड 7। स्वीप कर दिया, लेकिन फील्डर है वहाँ। एक समय के लिए ऐसा लगा था कि शायद गैप में चली जाएगी, लेकिन थोड़ा सा और फाइन होता तो कोई भी फील्डर नहीं था वहाँ। बड़ा शॉट है, बहुत शानदार, आसानी से क्लियर कर जाएंगे, 4 मिलेंगे। यहाँ से ऐसा प्रतीत हुआ कि मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन जो भी आए इस समय कॉन्फिडेंस देकर जाएगा। देखिए अब वो गेंद की वेट कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं बल्लेबाज, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है इस तरह की स्पिन को खेलने का। आजकल की क्रिकेट में इतनी फ्लाइट देखने को मिलती नहीं है, तो बल्लेबाजों को वो आदत होती नहीं है। ये देखिए इस बार टर्न देखिए उस पे, हरभजन सिंह की याद दिला दी इन्होंने इस गेंद से। उनका भी कुछ ऐसे ही स्लो करते थे हवा में, और पड़ने के बाद गेंद एक्स्ट्रा बाउंस टर्न के साथ। 6 रन आए पिछले ओवर से, इट्स 82 for 3 आफ्टर 12 overs। अच्छी गेंद आसिम गेंदबाजी के लिए। लॉन्ग ऑन पे खेला उसे।
हवा में गेंद है, बिल्कुल सीधी ऊपर चली गई और ये पार्टनरशिप टूटी। एक अच्छी खासी पार्टनरशिप के बाद वापस लौटेंगे बाजवा। हलीम अफान बहुत निराश हैं इस समय क्योंकि अपने पार्टनर की विकेट खो दी है। यहाँ ज़रूर रन सिर्फ 18 ही बनाए उस पार्टनरशिप में, लेकिन वो जो वहाँ खड़े हुए थे, वो कॉन्फिडेंस मिल रहा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। चौथा विकेट खोया, 24 गेंदों में 18 बना के वापस बाजवा। प्रतीक मराठे बल्लेबाजी के लिए अंदर जा रहे हैं। ये कमाल के पावर हिटर हैं, एक बहुत शानदार गेम है इनके पास और हलीम अफान के साथ एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ से अदा करना होगा। प्रतीक मराठे एक ऑलराउंडर जो कि बड़े हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं। They need 53 from 7.2, so 44 balls and 53 runs. ज़्यादा मुश्किलें होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर अगेन विकेट गिरती है तो ये मंजर कुछ और हो सकते हैं। सिंगल मिलेगा, ऑफ द मार्क होंगे। सामने खेला लॉन्ग ऑफ की दिशा में, सिर्फ 3 रन आए उस ओवर से और एक पार्टनरशिप तोड़ने वाला विकेट। इट्स 85 for 4 at the end of 13. का एक कैच ड्रॉप, प्रतीक मराठे का एक कैच ड्रॉप।
ये तेज की है गेंद और ये बाहर चली गई। ये जले पे नमक। चौका और ये 50 रन भी पूरे हुए हलीम के। 34 गेंदों में एक बहुत इंपॉर्टेंट पारी की जरूरत थी। 51 रन की ये पारी खेल दी है। 43 रन, 43 रन यहां से अभी भी चाहिए, लेकिन कैच ड्रॉप हुए हैं। वाइड होगी जी हाँ, बिल्कुल वाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर अपनी टीम के लिए एक बार फिर से आज इंपॉर्टेंट सिचुएशन में परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए। हर एक रन यहाँ से अब शवल खान को चुभेगा क्योंकि उन्होंने कैच छोड़ा है। यहाँ लॉन्ग ऑन पे खेलने का प्रयास था, डॉट बॉल हो जाएगी। इस ओवर में अभी तक 9 रन आए हैं। अनवर विकेट, 2 विकेट मिल सकती थी, एक छोड़िए, प्रतीक की भी मिल सकती थी। फिर से बड़ा शॉट है, इस बार कोई मौका नहीं है कैच का। बहुत दूर फील्डर से चौका और पूरी टीम इस समय कॉन्फिडेंट फील करती हुई क्योंकि ये कमबैक करा दिया है हलीम ने। ही इज ऑन 55 नाउ, 98 for 4 at the end of 14. हवा में गेंद थी, एक बार फिर से सिंगल मिल जाएगा। They are 99 now. जीत के लिए यहाँ से चाहिए 37 in 35 deliveries. लॉन्ग ऑफ पे खेला और इस सिंगल के साथ इट्स 100 अप फॉर ज़ाल्मी लायंस। इस चेज में एक समय ऐसा लगा था कि थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वापसी करी है। शफल किया, लॉन्ग ऑन पे खेला, फील्डर है वहाँ तो सिर्फ सिंगल ही मिलेगा। प्रतीक मराठे बहुत प्रयास कर रहे हैं बड़े शॉट्स का, यूजुअली लगाते भी हैं। कैरन पोलार्ड है अपनी टीम के, लेकिन आज इन 4 गेंदों में तो कुछ खास हुआ नहीं है। इनके बल्ले से आज बहुत कमाल के शॉट निकले हैं। He'll just get a single there, but अब इनकी पारी आज बहुत कमाल रही है। He scored 57 of 39. सामने खेलने का प्रयास था, कैच फाइनली पकड़ा गया है। 5 गेंदों की पारी में ये ऑलमोस्ट तीसरा जीवन दान मिल गया था, लेकिन 4 रन बना के लौटेंगे पवेलियन। क्या यहां से कुछ टर्न अराउंड हो सकता है? प्रतीक मराठे जिनकी यूजुअली पावर हिटिंग बहुत क्लीन रहती है, बाउंड्री आसानी से क्लियर करते हैं, लेकिन आज इन 5 गेंदों में कुछ भी नहीं कर पाए। कॉटन बॉल, आसिम का अच्छा कैच, जरूर सेकंड अटेम्प्ट पे कंप्लीट हुआ, लेकिन निराश लौटते हुए वापस प्रतीक।
नासिर अब्बास बल्लेबाजी के लिए 15 ओवर में 102 पे 5 है टोटल। 34 रन चाहिए यहाँ से 5 ओवर में। एक बार फिर से ये जिम्मेदारी आन खड़ी हुई है हलीम अफान पे। इनोवेटिव शॉट खेलने का प्रयास, वहाँ लैप करने का प्रयास, सिर्फ सिंगल मिलेगा। हवा में गेंद है, विकेट का मौका, एक और कैच का चांस ड्रॉप। नाइट राइडर्स ने आज अगर कैचेस पकड़े होते तो शायद ये मुकाबला अभी तक जीत भी गए होते। इतने कम रन बोर्ड पे लगाने के बाद भी अगर आप कैचेस छोड़ेंगे तो आप मैच में कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं मुझे। खेला है इस बार बैकफुट से। हर एक बल्लेबाज जो कि बल्लेबाजी कर रहा है या करके गया है उसने कैच का मौका तो दिया ही दिया है। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि कितने कैचेस पकड़े गए हैं और कितने ड्रॉप हुए हैं। हल्के हाथ से खेला नासिर अब्बास, गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब टीम पे जब ये मुश्किल आन पड़ी है तो इनके बल्ले से भी रन चाहिए। 31 रन चाहिए, मुकाबला थोड़ा सा क्लोज जाता हुआ। फिर से अच्छी गेंद खैम उमेर की। इस ओवर की शुरुआत से पहले 102 पे 5 थे, 35 रन चाहिए थे जीत के लिए 30 गेंदों में। अब देखिए 26 में 31, किनारा लगा है, ओवर समाप्त होगा 24 गेंदों में। अब यहाँ से चाहिए 31 रन जीतने के लिए। क्या कुछ और पलट फेर इस मुकाबले में, क्योंकि अभी ये मैच खत्म हुआ नहीं है। ज़रूर कैचेस छूटे हैं, ज़रूर वो थोड़ी सी वाइब डिफरेंट हुई है नाइट राइडर्स में, क्योंकि इनिशियल 2 कैचेस बहुत कमाल के पकड़े थे, लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं फील्ड में थोड़े कैजुअल गलतियां करते हुए नजर आए हैं नाइट राइडर्स। 24 गेंदे 31 रन। अगर इस ओवर में 2 या 3 रन आते हैं और आती है एक विकेट तो ये मैच ऑन होगा। और देखिए ये ओवर कर भी कौन रहा है, शवल खान कर रहे हैं। इन्होंने कैच छोड़ा था हलीम अफान का, अब वो सामने अब बदला ले सकते हैं। वो जो गलती की थी उसको ठीक कर सकते हैं, मौका है। ये 6 गेंदें हैं आपके पास। तीन ओवर 17 रन, एक विकेट आज इनके नाम। ये आखिरी 6 गेंदों में अपनी टीम को कम बैक करा सकते हैं, क्योंकि अगर ये ओवर अच्छा जाता है तो मैच में वापस नाइट राइडर्स। अगर ये ओवर महंगा तो औपचारिकताएं बचेंगी। फिर अपील, लेकिन अंपायर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं। फाइन लेग रीजन में
क्योंकि कोई था नहीं तो वो लैप खेलना चाहते थे, से गाइड करना चाहते थे। वो फ़र्क है, स्कूप और लैप में फ़र्क है। जब आप बैठ के अपनी पोजीशन से हिलते नहीं हैं और गेंद को वहीं से खेल देते हैं विकेट कीपर के ऊपर से, उसे स्कूप कहा जाता है। और लैप होता है गाइड करना, जब आप वो फाइन लेग रीजन में आप गेंद को गाइड करते हैं। कुछ वही करने का प्रयास था यहाँ। 107 पे पहुंचा, टोटल 2 रन आए। सो ये बैट दिया गया है, लेग बाइज नहीं है, जो कि इंटरेस्टिंग। डॉट बॉल इंपॉर्टेंट डॉट बॉल। हर एक डॉट बॉल यहाँ पे बहुत अहमियत रखती है। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, कीपर अपील भी कर रहे थे। बैक टू बैक 2 डॉट गेंदें। स्लोअर वन, बैक ऑफ द हैंड, बहुत अच्छी गेंद। दूसरे के लिए वापस आना चाहते हैं लेकिन नहीं। 3 रन आए अभी तक 4 गेंदों में। बहुत शानदार ओवर रहा है ये। जीत के लिए यहाँ से 20 गेंदों में 28 रन। क्या ये गेंदें डॉट हो सकती हैं? ये 2 बची गेंदें। हल्के हाथ से खेला नासिर अब्बास। स्मार्ट क्रिकेट है ये। जानते हैं कि बड़ा चांस हलीम के पास है क्योंकि वो सेट है। He's batting on 62. He scored more than 50% of the runs today for his team, Halim. They need 27 now from 19 deliveries. बहुत कमाल की गेंद ये, अपने स्पेल की आखिरी गेंद पे विकेट निकाला है बहुत बड़ा। ये ना सिर्फ विकेट है, ये मैच भी हो सकता है। क्या शानदार यॉर्कर। जसप्रीत बुमराह की याद दिला दी उस यॉर्कर से। मैच के इस मोड़ पे जहां हलीम अफान का वहां रहना बहुत जरूरी था, वो एक शानदार नॉक खेल के लौट रहे हैं पवेलियन। 62 किए उन्होंने 46 गेंदों में, 6 चौके और 3 बड़े मैक्सिमम। टीम इस समय खुश नहीं है क्योंकि 137 रन की चेज, जो कि इससे तो काफी ज्यादा आसानी से चेज होनी चाहिए थी। अब यहाँ मामला थोड़ा सा गड़बड़ है, गेम पलट गई है, इसीलिए इसे क्रिकेट कहते हैं। वो कहते हैं कि गिरगिट और क्रिकेट कभी भी खेल बदल सकते हैं, कभी भी रंग बदल सकते हैं, कुछ वैसा ही। मंसूर भट्टी, गेंदबाजी तो बहुत कमाल की आज इन्होंने, लेकिन अब ये सडनली रिक्वायर्ड रन रेट पे नजर डालिए, जो 6.5-7 रन प्रति ओवर के हिसाब से चल रहा था, वो 9 पे पहुंच गया है।
इंडिया और साउथ अफ्रीका का वो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल याद आता है, जहां 30 गेंदों में 30 रन चाहिए थे, सबने इंडिया को राइट ऑफ कर दिया था और साउथ अफ्रीका को सोच लिया था कि बन गए हैं चैंपियंस। वहां से इंडिया ने किया था कमबैक, वहां से बने थे विजेता। कुछ ऐसी सिचुएशन थी, ऑलमोस्ट रन अ बॉल चाहिए थे, 30 गेंदों में 35 चाहिए थे जालमी लायंस को। पिछले 2 ओवर बहुत शानदार रहे हैं। खयाम उमेर, बड़ा शॉट आया है, बहुत शानदार, 2 तो मिनिमम मिलेंगे। एक समय के लिए ऐसा लगा कि शायद गेंद उतनी अच्छी टाइम हो गई है कि चौके के लिए चली जाएगी, लेकिन यहां से अब चाहिए 25। अगर इस ओवर, इस बची 5 गेंदों में 5 रन या उससे कम आते हैं तो रह जाएंगे 2 ओवर में 20 और 10 रन प्रति ओवर का प्रेशर ही कुछ अलग है। हल्के हाथ से खेला, डॉट बॉल, बहुत इंपॉर्टेंट डॉट बॉल। यहाँ फील्ड में कोई भी गलती नहीं चाहिए। 111 पे 6, ये लो स्कोरिंग थ्रिलर। स्टेप आउट, लॉन्ग ऑफ पे खेला है, सिंगल ही होना चाहिए, सिंगल ही होगा। 3 गेंदें बची हैं इस ओवर की, 24 रन अभी भी चाहिए 15 गेंदों में। स्लोअर वन थी, अपील, और बिल्कुल वहीं थे जहां होना चाहिए बल्लेबाज को, क्रीज के अंदर। लेकिन ये डॉट बॉल बहुत अहम, इस समय हर एक डॉट बॉल बहुत इंपॉर्टेंट। 112 पे 6, 14 गेंदों में 24। किसने सोचा था ये मैच यहाँ आके खड़ा हो जाएगा। ये क्रिकेट का खेल है, ये विकेट्स का खेल है। बड़ा शॉट आया है, ये गैप में जा रही है, शवल खान पूरी तरह से गेंद के पीछे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चौका, मैच चेंजिंग चौका, मोमेंटम चेंजिंग चौका है या नहीं, ये देखना इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्ट्रेस इस समय पूरा है। वो टेंशंस, ये नेल बाइटिंग एनकाउंटर बन गया है। अब जिसने तो नेल्स नहीं काटे थे वो तो खुश हो रहे होंगे, क्योंकि वो खा चुके हैं, और जिन्होंने काट लिए थे उनके जो थोड़े बचे थे वो भी कम हो गए हैं। ये एज निकला, ये गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, क्या चौका मिलेगा? जी नहीं, 2 रन के लिए वापस आ जाएंगे। बजे 2 ओवर्स में, यानी कि 12 गेंदों में चाहिए 18 रन। इट्स 118 फॉर 6, 18 ओवर्स में। आप देख रहे हैं ये लाइव ब्रॉडकास्ट 22 यार्ड्स ब्रॉडकास्ट पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर कीजिए, इस स्ट्रीम को लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये एंटरटेनिंग मैच का लिंक शेयर कीजिए। We would also like to thank our sponsors for this broadcast: Northwest Physio, Kinetic Sports, Source Sports और YYC Cricket. We thank all our sponsors for their valuable contribution in this broadcast. लेकिन ये broadcast अभी और मज़ेदार बनने वाली है, क्योंकि ये जो 12 गेंदों का खेल बाकी है जिसमें चाहिए 18 रन, और ये ओवर देखिए कौन करने आ रहे हैं, उद्दीन कमाल करने आ रहे हैं ये ओवर, जिन्होंने बल्लेबाजी से आज बहुत इंपॉर्टेंट रन, इनकी बदौलत ही ये टोटल 136 तक पहुंचा था। अब फिर उन्हीं पे बात आ खड़ी हुई है। सेकंड लास्ट ओवर सबसे इंपॉर्टेंट ओवर होता है, डिफेंड करते हुए, आउटसाइड ऑफ स्टंप, वाइड गेंद, इंटरेस्टिंग कॉल, क्योंकि बैट्समैन थोड़ा शफल भी हुए थे। तो 2 ओवर में अब चाहिए 17, 12 गेंदें, 17 रन्स। Who's gonna win this match? पोल कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार कर रहा है, उस पोल पे वोट कीजिए, बताइए कौन जीत रहा है ये मैच।
हल्के हाथ से खेला, सिंगल ही मिलेगा। डबल लेने जाएंगे तो रन आउट हो सकते हैं। 16 रन 11 गेंदे। कमेंट बॉक्स में सभी स्पैम कीजिए कि कौन जीत रहा है इस मैच को। इज इट ज़ाल्मी लायंस और नाइट राइडर्स? कौन किस टीम को सपोर्ट कर रहा है? लॉन्ग ऑफ पे खेला है इस समय। अच्छी फील्डिंग एफर्ट, सिर्फ सिंगल। 10 गेंदों में 15। आखिरी ओवर कौन करेगा? क्या खयम उमेर ही करेंगे आखिरी ओवर, क्योंकि शवल खान के ओवर खत्म हो चुके हैं। किसको थमाई जाएगी वो जिम्मेदारी आखिरी ओवर की? फिर से खेला है, सिर्फ सिंगल मिलेगा कवर्स के क्षेत्र में। $122 for 6। यूजुअली 145-50 आसानी से चेज होता है यहाँ, लेकिन गेंदबाजी बहुत कमाल की। नाइट राइडर्स ने आउटसाइड ऑफ स्टंप, वाइड मांग रहे हैं जी। नहीं, वाइड मिलेगी नहीं, क्योंकि बहुत अंदर थी। इट वाज वेल इनसाइड द वाइड गाइडलाइन। इस समय पे आके बल्लेबाजों को यही लगने लगता है कि जो गेंद बल्ले से नहीं लगी वो या तो वाइड है या नो बॉल होनी चाहिए, क्योंकि प्रेशर इतना है। 8 गेंदों में 14। बड़ा शॉट है ये, फील्डर है वहां, उसको बाउंड्री के अंदर तो रोका है, लेकिन 2 रन नहीं रोक पाएंगे। 12 चाहिए अब, 7 गेंदों में 12। ये ओवर में अभी तक आ चुके हैं 6। क्या थोड़ी यहाँ बॉलिंग में मिस कैलकुलेशन हुई है नाइट राइडर्स से, क्योंकि उद्दीन कमाल का अभी भी 1 ओवर बचा है और ये उनका आखिरी ओवर होगा आज के दिन का। क्या मिडिल ओवर्स में 1 आध ओवर और करवाया जा सकता था इनसे? ये अगर मगर का खेल ये बचा नहीं है अब, क्योंकि 7 गेंदों में 12। स्ट्राइक पे भट्टी, वाइड आउटसाइड ऑफ स्टंप, किनारा, और कैच छूटा एक बार फिर से। ये कुछ नई कहानी नहीं है। नाइट राइडर्स के फील्डर हों, कैच उनके पास जाए और वो पकड़े ना, ये आज सारा दिन हमने देखा है। 125 पे 6, 11 रन चाहिए जीतने के लिए आखिरी 6 गेंदों में। छह गेंदें 11 रन। इट्स T20 क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। चाहे वो हाई स्कोरिंग एनकाउंटर्स हों, चाहे वो लो स्कोरिंग थ्रिलर्स, इसीलिए तो T20 क्रिकेट वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग क्रिकेट्स। इस फॉर्मेट का इजाज़ ही इसीलिए हुआ था कि सभी दर्शक एंटरटेन हो पाए। 6 गेंदे 11, बड़ा शॉट, शवल खान है वहां, सिर्फ सिंगल। 5 गेंदों में 10। आखिरी गेंद पे चौका आया था पिछली इनिंग की आखिरी गेंद पे। उद्दीन कमाल, उन्होंने चौका लगा के इनिंग समाप्त की थी। क्या वो चौका हराएगा ज़ाल्मी लायंस को? ये देखना होगा। मिड ऑन पे खेला है, सिंगल मिलेगा। 4 गेंदों में अब चाहिए 9 रन। इतना इंटरेस्टिंग तो आज आईपीएल का फाइनल भी नहीं हुआ जितना ये मैच हो गया है।
डाउन द लेग थी अगेन, स्क्वायर लेग है वहां, इजी थ्रो। 3 गेंदों में 8 रन। अब यकीनन बाउंड्री या मैक्सिमम चाहिए, क्योंकि 2 गेंदों में 8 तो बहुत मुश्किल है। फिर आप वो भगवान के भरोसे ही बैठिए। 3 गेंदों में 8, इस गेंद पे मैक्सिमम ना आया या चौका ना आया तो गेम से बहुत दूर रह जाएंगे। बड़ा शॉट आया है, कितना बड़ा शॉट है ये 6 रन, ये 6 रन। ये क्या हो रहा है बीच मैदान में? स्लॉट में गेंद गिर गई और बिल्कुल सामने खेल दिया नासिर अब्बास ने। कैच का मौका एक बार फिर से, कैच तो छोड़ दीजिए, कैच तो आज हुए ही नहीं है, लेकिन ये सीधा साइड स्क्रीन पे जाके गेंद लगी। 2 गेंदों में अब 2 चाहिए। सडनली जो गेम से बाहर से हो गए थे जालमी लायंस, इस मैक्सिमम के साथ फिर से अब मुझे लग रहा है कि यहां से तो मैच नहीं हारेंगे। 2 गेंदों में 2 से तो नहीं हारना चाहिए। ये डाउन द लेग थी, सिंगल हो गया, मैच टाई हो चुका है, स्कोर्स लेवल हो चुके हैं। अब चाहिए एक गेंद में 1 रन। क्या सुपर ओवर, क्या सुपर ओवर के लिए तैयार हैं आप? क्योंकि इस गेंद पे अगर ये आई डॉट या विकेट तो हमें जाना होगा सुपर ओवर की तरफ। 135 पे 6, स्कोर्स लेवल। शॉट लगाया है और ये रन आउट का मौका और ये आउट। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ सुपर ओवर। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच। ज़ालमी लायंस नाइट राइडर्स ने दिया है हमें एलीट टी20 का वन ऑफ द बेस्ट मैचेस, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। बहुत शानदार स्टॉप था वहां कवर्स पे। रन आउट के जरिए प्रेशर सिचुएशन, क्रंच सिचुएशन में और क्या उम्मीद करते हैं आप? सुपर ओवर तक पहुंच गए हम। 3 गेंदों में 8 चाहिए थे, वो आया मैक्सिमम। फिर 2 गेंदों में 2 चाहिए थे, सिंगल आया। फिर 1 गेंद में 1 और फिर ये हुए रन आउट। मंसूर भट्टी रन आउट हुए, जिसका मतलब है ये मैच समाप्त हुआ। आई एम नॉट प्रीटी श्योर ये सुपर ओवर हो रहा है या नहीं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सुपर ओवर शायद नहीं होगा, तो नॉट प्रीटी श्योर व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। It is a tie, so tie is a result. There is no super over. जिसका मतलब है कि ये टाई समाप्त होगा, दोनों टीम्स को मिल जाएंगे इक्वल पॉइंट्स। बहुत इंटरेस्टिंग मैच है ज़ालमी लायंस और नाइट राइडर्स। टॉस जीता था ज़ालमी लायंस ने, गेंदबाजी का फैसला रिजवान सलीम, ये दूसरी इनिंग की रेड कार्ड दिखा, बॉलिंग कार्ड दिखा रहे हैं आपको, बैटिंग कार्ड इनफैक्ट। 12 किए रिजवान सलीम, सुमेर जल्दी आउट हुए, हलीम अफान ही स्कोर्ड 62, बाकिर जायदी गॉट आउट अर्ली, Jalal Bajwa scored important 18, building that partnership with Halim, and Nasir Abbas scoring those important 15 runs, and Mansoor Bhatti, he got out when they needed 1 ball, 1 run.
अभी भी ये फाइनल समझ नहीं आ रहा है कि क्या ये सुपर ओवर है या फिर मैच को टाई डिक्लेयर किया गया है। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि क्या सुपर ओवर होगा या फिर ये मैच टाई डिक्लेयर कर दिया गया है। हमें तो यहाँ से समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। So we got the final result. It is a tie. There's no super over because usually super over होता है. I'm not pretty sure why is it not happening, but ये bowling card पे नजर डालिए. 4 ओवर 21 2 विकेट शवल खान कमलुद्दीन. ये मिसकैलकुलेशन शायद थोड़ी सी अगेंस्ट गई. नाइट राइडर्स के 3 ओवर 17 2 विकेट इन्होंने ओवर पूरे नहीं किए. खयम उमेर 4 ओवर 34. अजमत खान 3 ओवर 21 1 ओवर 12. अभिषेक पटेल 3 ओवर 23 अनवर एंड 2 ओवर 7 रन 2 विकेट आसिम रजाक. 6 एक्स्ट्राज आए इस इनिंग में. तो बहुत ही शानदार ये मैच समाप्त हुआ एज अ टाई between ZALMI Lions and Knight Riders. Thank you for joining us in this broadcast. This is Vibhor Bajaj signing off live from 22 Yards broadcast. Thank you for watching.